is Teymoor. Today I have Shumail and Sami from IFP. So welcome back to IFP Baithak. I think it's been a long time कि हमने Exactly. ये वाला नहीं किया. And inshallah today we're gonna talk about the Pakistan versus Myanmar game, which is the Asian Cup qualifier game that we have coming up. It's in a bay match. So guys, आप लोग बताएं कि are you guys excited for the match? फाइनली चलो मैच हो रहा है पाकिस्तान में यही एक्साइटमेंट है कि यार एटलीस्ट आफ्टर सो लॉन्ग गेम हो रही है तो और इस दफा थोड़ा ओपोनेंट भी रिलेटिवली इजियर है मतलब इजियर तो नहीं कहेंगे लेकिन रिलेटिवली अगेंस्ट द बिग लाइक्स ऑफ सीरिया सऊदीया जॉर्डन टाइप उससे तो होपफुली तो लेट्स सी होपिंग फॉर अ गुड गेम इंशाल्लाह एंड Yeah. बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम Baki Sami, what do you think? Are you excited? Yeah, I'm very excited. काफी Very time हुआ excited. है since we played. So, like Shumail Bhai said, it's अच्छा. might be one of our easiest games up till now because we've played against the Hmm. likes of Saudi, Tajikistan, Jordan. Yep. So I think it will be a good match. Yeah, I think after a very tough World Cup qualifying round two, and looking at the last game against Syria, so I think we have faced very difficult opponents in the last 1 year. And honestly, expectations zero थे, at least मेरे side से तो बिल्कुल zero थे for the team. I think this round, obviously, we come on the selection wise. I think like I said, it's not the ideal training camp that we wanted. We wanted a longer training camp. बेशक मई के शुरू में शुरू हो जाता मई मई 20th या मई 25th से शुरू हो जाता. At least हमारे पास 10 12 15 दिन होते to train with the team and उसके बाद फिर they travel to. Yeah, I think they're एग्जैक्टली traveling on the 7th as well. 7th को travel कर रहे हैं and probably direct flight नहीं है तो उनको कहीं layover करके फिर दूसरी flight लेनी पड़ेगी. So coming on the selection regarding, so guys, what do you think about the selection of the team? I think it's pretty much 90% of the same team. हाँ Hmm. एग्जैक्टली मैं बस अपने बिट्स थोड़े से मोर और लेस तो वही सेम टीम है कुछ एक्सक्लूजन हुई है एक कीपर्स में आदम खान की हुई है विच वाज अ सरप्राइज टू मी आई एम नॉट श्योर उसकी इंजरी वगैरह है या क्या लेकिन एटलीस्ट कैंप का पार्ट रहा है आदम पिच प्रीवियसली लेकिन इस दफा नहीं था कुछ इंक्लूजन्स थी डेफिनेटली रायन मोहम्मद की डायस्पोरस में बात करें रायन मोहम्मद और अली शाह जो हैं और बाकी लोकल सर्कल्स में से कुछ इन्स एंड आउट हुए हैं चित्राल वगैरह का जाहिद शाह वगैरह इस तरह कुछ तो प्रीटी मच बैलेंस्ड स्क्वाड मोर और लेस वही स्क्वाड है स्टीफन के पास वही नॉन पुराने प्लेयर्स हैं एक्सक्लूजन्स भी जो पहले चल रही थी मोर और लेस उसमें कोई इस तरह की अपडेट नहीं है जैसे ऑलरेडी ओटिस वगैरह हो गया ईसा हो गया या आदिल एंड एतजाज को हर बार दफा डिस्कस करते हैं लेकिन वो they still are out and pretty much solid squad स्टीफन को अवेलेबल था और इस दफा अच्छी चीज ये थी कि मोस्ट ऑफ देम आर प्लेइंग एंड आर इन गुड फॉर्म डायस्पोरस Yeah. की भी बात करें लास्ट टाइम जो था बहुत सारे हमारे प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे थे या फॉर्म में नहीं थे फजल टाइप इंजर्ड था मतलब इंजरी के बाद आ रहा था अब्दुल समद उस वक्त विदाउट क्लब था काफी सारे ये जो प्लेयर्स थे ये आउट ऑफ फॉर्म थे अभी काफी आलमगीर हो गया ये सारे अब्दुल्ला इकबाल द लाइक्स ऑफ फजल अब्दुल समद ये काफी अच्छी फॉर्म में है तो ये अच्छा एक पॉइंट होगा सो लेट्स सी होपिंग फॉर द बेस्ट Sami, what do you think about the squad that we have right now? Do you think it's I good think it's a enough pretty. to beat it? I think it's a strong squad, especially with Ali Shah included. Yep. As we all know, Otis Khan is not playing this time, Yeah. just like last time. So we definitely needed a new winger. So I was keeping an eye on his stats, and he was Yep. playing pretty well. A couple of goals, couple of assists. So I think he'll be an exciting addition. Yes, and I also heard that I think he has around 150 senior games, and Okay. recently just scorers आए, all of them are very young. रयान देख ले जो हमारे पास नया कीपर भी आया था जो I think is not in the squad as well. और मकील वगैरह they are all very young and they're playing for youth teams. This guy has around 150 senior games if I'm not wrong, and I think he Mhm. has around 25 goals overall. So I think he's very experienced in terms of playing senior football.
I think सबसे close, I think Otis ही आता है. I think he has 300-400 games playing senior football. I think he has the most games played. So I think after him probably it's him, and then probably आपके पास maybe Isa Suleiman हो सकता है. So I think he's a good addition to the team. We needed some senior member who has been playing for some time and has that exposure. And from what I've heard from other players as well, that he is very good. So I wouldn't be surprised if Stephen starts him as a striker, because I think formation पर इसके बाद आते हैं, and so I think he maybe can start. Baki, in terms of the people that I've missed, obviously Otis ka, like you have mentioned. The other name was Harizeb, as you know. Harizeb Hmm. has there was rumors about him as well, maybe joining. But right now, जितना हमें भी पता लग रहा है sources के through, he will be in the squad next camp में, जब भी लगता है सितंबर में लगता है, अक्टूबर में लगता है. And honestly, right now, the logical step would be that he is missing out because of the FIFA Club World Cup. That makes sense right now. Maybe he's committed to that with जो भी हुआ है, from what we have heard right now. So I think TK is fine. Maybe whenever he comes, he's going to be a great addition to the team as well. So Sami, I wanted to know about any updates from the Myanmar game. Obviously, we don't know about the players a lot Hmm. regarding their lineup and their team selection. If you can tell me about some key players that they have. Well, for starters, Myanmar they've won their two out of their last five games, I believe. The most recently they won Okay. against Afghanistan. It was a big achievement for them, of course, Yep. because as you all know, Afghanistan has a pretty strong team. But Yep. we've heard some rumors about their coach not being very helpful. So Okay. yeah, well, I'm expecting Myanmar to line up in a 4-1-4-1 or a 4-2-3-1. They usually play four at the back, and they rely a lot uh, on their fullbacks because I've analyzed their last two games, and they rely a lot on their right back specifically because he plays very high up the pitch, just like we saw against Syria. Okay. Their right back was also very high up the pitch, but that means he's also very vulnerable. If you look at their last game against Vietnam, I believe, they've conceded a few goals because of the mistakes of their right back. So I think for Pakistan, it's a big opportunity to score some goals or get some good attacks in. So Uh, Shumail, I wanted to know, do you want to add something? Sami, if Sami is finished, तो मैं पाकिस्तान हाँ पे sure ऐड. sure. हाँ. हाँ sure sure, अब ऐड करें. अच्छा, बेसिकली ऑपोजिशन एनालिसिस मेरी स्ट्रेंथ नहीं है. वो समी ने काफ़ी उस पर काम किया, तो उसको ज़्यादा थोड़ी क्लैरिटी होगी. लेकिन रिगार्डलेस, इवन इन सीरियन गेम भी उनका राइट बैक काफ़ी एडवांस था, तो चांसेस आपके पास बन रहे थे. एंड इस वाली गेम में तो आपके पास डेफिनेटली चांसेस बनेंगे. एंड स्पेशली लेफ्ट साइड से अगर हम फजल की बात करें, तो फजल इज ऑलरेडी काफ़ी अटैकिंग माइंडेड है, तो होपफुली वी आर गेटिंग सम चांसेस. अब बड़ा डिपेंडेंट है कि हाउ द मिडफील्ड कंट्रोल्स द गेम. अगर मिडफील्ड कंट्रोल करती है गेम, तो काफी सारे चांसेस बने हैं. इट्स नॉट लाइक कि अभी हम सीरिया या सऊदीया या ताजिकिस्तान या जॉर्डन के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जिधर हमारे पास पोजीशन मेयरली मेयरली 16-17%, 20 से ऊपर नहीं गई. तो इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग सम पोजीशन कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ फेयर शेयर ऑफ द बॉल होगा. तो लेट्स सी उसमें हाउ स्टीफन ट्वीक्स. एक जो चीज बहुत फायदा दे रही होगी, वो होगी इस गेम में फरीदुल्ला. फाइनली फरीदुल्ला का जो होल्ड अप प्ले है, दैट वुड कम इनटू प्ले इस गेम में, क्योंकि प्रीवियसली भी फरीदुल्ला जब वो होल्ड अप प्ले कर रहा था इन द फाइनल थर्ड, उसके पास इर्द गिर्द की कुछ सपोर्ट नहीं थी. ना लुकिंग एट दिस अपोजिशन, और इनके अगेंस्ट हम अगर इनके स्ट्रेचर जो है अपोजिशन का, उसमें फरीदुल्ला वुड बी अ बिग पार्ट. And I hope he would be starting. He has been in relatively good form. लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह ही खेल रहा है, विच इज जो भी अवेलेबल है, लेकिन अच्छी फॉर्म में है, तो उसका होल्ड अप जो है इट वुड बी वेरी क्रिटिकल. सो लेट्स सी हाउ द स्पेसेस अराउंड हिम टर्न आउट टू बी, एंड hopefully we can score our probably the third goal in a year or so. कुछ राइस कंबोडिया राइस, उसके बाद अभी हमने गोल नहीं किया, तो एक गोल ड्यू Third है. goal.
third goal. Mhm. Sorry? I'll say it. So I think, Hani, I agree as well. I think it's gonna be the third goal that we scored. The last goal was by Riz Nabi Right. against हाँ, Tajikistan in the World Cup qualifier exactly. that we. Exactly. So मुझे जो लगता है ना, at least because he's not gonna change the formation, he's gonna play 5-3-2. Stephen, Yeah, same. I think you and Sami would also agree that 70-80% Mhm. he's gonna. And the reason is that we don't have Isa Suleiman because we don't Exactly. have two ball playing center backs. Abdullah Iqbal or Isa Suleiman hota hai, I would guarantee he's gonna play 4-4-2. But sadly we don't have that. Or Myanmar थोड़ी हल्की team है, like Sami and you have said as well. तो मुझे लगता है ना, because I would say we can easily predict the lineup right now. I think does 10 out of 11 I can predict it because keeper तो आपके पास यूसुफ भाई हो गए. That's not gonna change. ठीक है, डिफेंस में you guys can also counter पे आप लोग को क्या लगता है? मेरे मुताबिक at least it's gonna be Abdullah Iqbal. Probably I think if Bakar Peloche is in the team, right? I think वो है है उसमें है आपके squad में. I think probably he's gonna start. और उसके साथ then you have the left foot center back क्या नाम है उसका, हसीब Hasib. Proceed. I think that's gonna be the main three center backs. Because this exactly is the I think same team that he went against Syria as well. So I don't think he's gonna change. Left back, full back Fazal और रावी हो गए. Midfield three तो इसके favorites है, Reis Nabi है, Alamgir है, and I think Gujar will make the team again. There is no one that can replace him right now. अब सारा गेम आती है फॉरवर्ड्स कौन खिलाता है. He has too many options. You have Makil. He can play Adil. He can play Faridullah. He can play Alisha as well. He can play आपका जो दूसरा जिस for I forgot his name as well, जो भी समद नया और आया. रायन हो गए बाकी अपने Ryan or Samad. So too many options. Honestly, I wouldn't be surprised if he starts Alisha with either Adil or what. But Adil हो सकता है chance he's उसका favorite है, but he just came back from injury. So exactly I'm not sure कि exactly क्या होगा. What do you think who's gonna start? This podcast has been powered by Madan. Madan is a pickup app you can use to play football near you. To quickly go over some of its features, the Match tab will enlist all the relevant details for you, like the location and the time. Lineup tab में आपको confirmed players की list, उनकी peer-to-peer ratings और उनके individual statistics भी नजर आएंगे. You can use this tab to join the team. Ground tab में आपको pitch information भी मिल जाएगी. Head over to the wall tab to interact with the team. The Maidan app also has a create feature which you can use to book yourself a match anywhere and also to find yourself a team. The chat feature allows you to speak to other players. Your match stats can be found underneath the stats tab on your profile. हर मैच के बाद आपको एक पोस्ट मैच एनालिसिस का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप हर प्लेयर को रेट कर सकते हैं. Madan app also offers you benefits like cashbacks and live bookings are set to be introduced soon. ये ऐप सिर्फ players नहीं बल्कि ground managers को भी cater करती है. They can use the Madan dashboard to schedule and keep track of matches. So what are you waiting for? Use the pickup app and find yourself a team, a slot, and go play football, even if your friends are too busy. Up front for Pakistan. या मोर और लेस ये तो पिछली टीम पीछे तो सारे यही सेम ही है अप फ्रंट में ही एक फरीदुल्ला मेरे ख्याल में ही डज मेक सेंस इस गेम में और उसके साथ अली शाह इज अ क्विक विंगर और स्ट्राइकर आप उसे यूज कर सकते हैं लेकिन अब वो कैंप में भी उसने काफी अब जो है आज डेनमार्क के जो प्लेयर्स वगैरह थे यूसुफ बट भी आज ज्वाइन किए आज what is आज है गलबन 3 तारीख है Yes. 4 होगी अभी अगर हम बात करें तो आज Yes. ज्वाइन किया है उसने यूसुफ भट्ट ने तो अलीशा लेट इंक्लूजन भी है आई एम नॉट श्योर अब उसे स्टीफन क्या देखता है लेकिन एक जो सेंस बन रही होगी मेरे ख्याल में अदील यूनुस वुड स्टार्ट अली शाह माइट कम अगेन लेटर और आप मिडफील्ड अगर ये बड़ी डिफेंसिव अप्रोच आपने बात की ना अगर हम रईस की भी बात करें अली उजैर गुज्जर की भी बात करें आलमगीर की भी बात करें इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर वो तीनों को खिलाता है और क्योंकि ऑलरेडी आप 5 एट द बैक पे जा रहे हैं 3 आप मोर और लेस डिफेंसिव मिड्स के साथ जा रहे हैं आलमगीर आलमगीर के अलावा
तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि उसमें स्टीफन वुड गो फॉर दिस डिफेंसिव अप्रोच विच सीम्स लाइकली कि वो जाएगा आगे अगेन फरीदुल्लाह probably alongside Adil would start and then later on Abdus Samad can even come क्योंकि वो भी काफी अच्छी फॉर्म में है इवन हारून हामिद कैन कम रायन मोहम्मद मे बी अली शाह ये उसके बाद स्टीफन के पास बड़े ऑप्शन बच जाते हैं कि लेटर हाफ में नहीं। आप गेम और क्योंकि एक पाकिस्तानी टीम क्रिटिसाइज भी हो रही है कि लास्ट 20-25 मिनट्स वी आर ऑलरेडी डन ठीक है हम खेल चुके होते हैं तो उसमें बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं और पहले भी तैमूर ने कहा ना ये म्यांमार बड़ी इजी ऑपोजिशन है इजी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली इजी जब तक जो अभी हमने मैच खेले हैं इट वोंट बी एन इजी ऑपोजिशन रेस्ट अश्योर्ड और लेट्स सी उसमें क्या होता है लेकिन रिलेटिवली इजी होगी लेकिन इट वुड बी अ टफ गेम बड़ी क्लोज कॉल अगर पाकिस्तान मतलब कोई जीतता भी है तो इट वुड बी बाय वेरी स्लाइट मार्जिन 1-0 टाइप कोई हो रहा होगा इस तरह ये नहीं हो रहा होगा कि वी आर जस्ट गोइंग all over Myanmar. It would be pretty much close game. And let's see how the forwards link up. But for me, Adil Yunus with Fareed. Makes sense. Sami, I wanted to ask you about Myanmar. Like, can you tell us like how many matches have they played this year? Like, do you have an estimate कि कितने matches उन्होंने खेले compared to us? बेशक 2025 They've का only देख played लो या if you can go back a bit. they've only played against Afghanistan this Yeah, year. you say. Yeah, they Okay, haven't played any only friendlies Afghanistan, before. no friendlies as well. Yeah, no. Okay, I've and what heard about that they've been 2024 if you have any? playing as under 22s and yeah, just in Okay. training matches against their uh Okay, so yeah their B relatively they squad. don't have a lot of exposure right now. Like No, rhythm नहीं चला. They only play one match against Afghanistan and then they're playing against us. उनका So I think बिगेस्ट that's एडवांटेज interesting. म्यांमार का हाँ म्यांमार का बिगेस्ट एडवांटेज उनकी अभी भी लीग है बेशक था कि उनकी अपनी लोकल लीग होगी उनके मोस्टली द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन देयर लोकल लीग लेकिन Agree. फिर भी वो सारे रेगुलर खेले और वो Yeah. स्ट्राइकर जिसने यूनाइटेड के अगेंस्ट स्कोर किया बीइंग अ यूनाइटेड फैन Longmore. ऑलरेडी बड़ा Yeah. घटिया सा सीजन गुजरा एंड टू सम अप विद अ पोस्ट सीजन गेम जिसमें फिर हार गए एंड देन अगेन वो जिसे कहते हैं ना कि वो पता चले कि भाई ये अगले हफ्ते पाकिस्तान के खिलाफ भी खेल रहा है तो एक Sure. वैसी बुरी फीलिंग है तो आई होप वो स्कोर ना करे तो इंशाल्लाह लेकिन ये है कि उनकी स्ट्रेंथ इस टाइम अगर हम उन्होंने गेम्स नहीं भी खेली तो इस टाइम उनकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली एक रेगुलर प्लेइंग टाइम है उनके प्लेयर्स का Obviously. तो ये चीज़ है नहीं ऐसा इम्पोर्टेंट होता है ना बिकॉज देखो इफ आपकी लोकल प्लेयर्स सारे मैचेस खेल रहे हो दे प्लेइंग देयर मैच फिट ठीक है दैट्स द टर्म दैट वी वांट टू मोस्ट ऑफ आवर लोकल प्लेयर्स आर नॉट इवन प्लेइंग ठीक है चलो आलमगीर वगैरह दे हैव बीन प्लेइंग भूटान में खेल रहा था अब आपके पास बाकी जो पोपो के प्लेयर्स हैं ठीक है यू हैव यंग प्लेयर्स ऑब्वियसली दे आर ट्रेनिंग एंड बट वही बात है कि मैच कितना खेल रहे हैं दे नॉट प्लेइंग वीक इन वीक आउट so obviously उधर hurt करते हैं and obviously looking at training camp it starts on first and I think 7th या 6th तक जाएगा उसके बाद they're gonna leave for Myanmar so and compared to Myanmar they probably had a longer training camp उनका proper system होगा and Sami can probably tell us Sami do they have any diaspora players in the team like yeah सारे They local have a हैं few. Uh, they're all local. Yeah, but some of okay them okay play all in local leagues local like उनके कुछ प्लेयर्स Thailand मतलब or डायस्पोरा नहीं Malaysia. लेकिन उनके प्लेयर्स कुछ मलेशियन लीग्स में खेल रहे हैं आई गेस जो बाहर कुछ इस तरह खेलते हैं. Yeah. मतलब उनके पूल पे Malaysia, but डायस्पोरा Thailand, पूल technically that टाइप ही does बोल Cambodia. count as Yeah. diaspora because if that's good अगर if they have that so guys आपको क्या लगता है in terms of चलो साथ साथ मैच की भी बात हो रही है what do you think about the future तुम्हें क्या लगता है in terms of football do you think Stephen should stay and अगर वो if he stays तो आपको realistic expectations क्या होने चाहिए for the future ये भी एक important सवाल है I think it's a I would love कि आप दोनों opinion देने then I'll give my opinion on this as well अच्छा these comments can certainly backfire लेकिन कोई मत मेरा मानना है कि स्टीफन शुड कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर दिस एशियन कप और जो रिलेटिवली मतलब अगर हम बात करें टिल द एंड ऑफ दीज क्वालिफायर्स ये जो 6 गेम्स है इस दरमियान जितनी भी आती हैं फ्रेंडलीज आते हैं अगर होपफुली अब नई फेडरेशन आ रही है तो उसके साथ होपफुली होगा ये चीज़ें लेकिन आई होप ही stays till the end of at least this
KFC एशियन क्वालिफायर। हाँ वही वाली बात है, वो उस दिन प्रो स्पोर्ट्स में भी शाहरुख भाई बात कर रहे थे कि आप एक रीजनेबल केपीआईज दें कि भाई ये आपने करना है, आप उसको फिर उसके हिसाब से आप भी अपना इनपुट दें, स्टीफन अपना इनपुट दे, फिर आप उसको जज करें। लेकिन एज फार एज मेरी ओपिनियन है उसमें यह है कि ही शुड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दीज एशियन क्वालिफायर्स एंड देन लेट्स सी रिजल्ट्स पे, बाकी ओवरऑल प्रोग्रेस पे फिर लेट्स सी क्या बनता है। समी, व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? I agree with Shumail bhai. I think Steven should stay because if you look at our last few games, our team is really gelling together. So opportunities are रही हैं, Yep. but of course you have a few fans जो Hmm. थोड़े जज्बाती होते हैं because yeah, for example Steven excluded Exactly. Yeah. Itsas, Adil, Otis Khan. तो वो जज्बाती होते हैं and they say like उसको निकाल दो. But I think Hmm. Steven should really stay. या वही, अब जब अब इवन मेरा व्हेन वी इसमें कमेंट, Yep. हाँ सॉरी, वो कमेंट कर रहा था कि इवन इफ वी कमेंट नहीं किया नहीं, ना कि बोलो वो ही बोलो शुड बोलो। स्टे, तो ये नहीं है रिलेटिवली कि वो बिल्कुल ही मतलब ही इज डूइंग ऑल राइट। बहुत सारे फ्लॉज हैं, ठीक है, हम भी कोई पॉइंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, प्लेयर सिलेक्शन है, हम ये प्लेयर सिलेक्शन पे बात करते हैं, टैक्टिक्स है अगेंस्ट। अब ये वाली मैंने बात की ना म्यांमार के अगेंस्ट रिलेटिवली इजियर होगा इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले, तो सीरिया के अगेंस्ट, सऊदी, जॉर्डन, तो इसमें बड़ा मैटर करता है कि आप किस अप्रोच से जा रहे हैं। आप डिफेंसिव अप्रोच सेम, 5 एट द बैक, 3 होल्डिंग मिड, सेंट्रल मिडफील्डर्स उनके साथ जा रहे हैं जो सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव माइंडेड हैं, उनके साथ जा रहे हैं, तो बड़ा मैटर करेगा। लेकिन लेकिन वेइंग ऑल ऑप्शंस अगर सारी बात करें कि प्रोज एंड कॉन्स आप डिसाइड करें, तो एट दिस टाइम ऑफ इंस्टेबिलिटी आई थिंक ही इज द राइट गाय टू एटलीस्ट गो टिल द एशियन एंड ऑफ एशियन क्वालिफायर्स। हम्म। हाँ, आई थिंक देखो, आई एग्री विद बोथ ऑफ यू, बट आई वुड गो स्टेप अहेड। आई वुड से कि यार देखो, एशियन कप क्वालिफायर्स आपके मार्च में खत्म हो जाएंगे, ठीक है? दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। आई वुड से देखो, there's two options. If you want to change the coach right now is the best time. अगर इस मैच के बाद आपने चेंज करना है, because you have June, you have July, you have August, you have, I would say, a bit of September as well. Next आपके वैसे एशियन कप क्वालिफायर्स अक्टूबर में है। अगर आपने कोच चेंज करना है ना, तो दिस would be the best time to do it. I would say अगर चेंज करना है, because this is what happened with Shahzad Anwar as well, if you remember. सैफ के बाद वो तो विंडो और भी छोटी थी, जुलाई में आपके पास खत्म हुए हैं, और आपका सितंबर और अक्टूबर में या सितंबर में आपके वो कैम्बोडिया वाले मैचेस थे, if you remember, right? तो स्टीफन लिटरली थ्री वीक्स पहले आया था शायद पाकिस्तान। सो आप या इसमें कर सकते हो, the other option which I agree is that case, give him more time, let him play till the SAF, ठीक है? SAF भी तो उसको, and probably give him some realistic, 2-3 साल को दो, and make some realistic goals कि यार आपने ये जो remaining एशियन कप क्वालिफायर्स में आपने इतने पॉइंट्स करने हैं, सैफ का आपने फाइनल तक पहुंचना है, चलो अगर जीत ही सके, रीच द फाइनल। नेक्स्ट एशियन कप आ रहा है, हाईलाइट ये होगा कि नेक्स्ट एशियन कप के लिए हम क्वालिफाई कर ले, राइट? दैट शुड बी आवर रियलिस्टिक गोल कि हम एटलीस्ट 2-3 सालों को दे। तो मे बी यार उसके बाद मे बी वी कैन असेस हिज एक्चुअल प्रोग्रेस की क्या है, बिकॉज अभी स्टीफन के पास ना, ही डजंट हैव द होल सारे टूल्स नहीं है, ही डजंट हैव प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप्स, ठीक है? प्लेयर्स का भी थोड़ा सा है, लोकल प्लेयर्स नहीं खेल रहे, देयर इज नो लीग, ठीक है? प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ things that Stephen needs to make sure कि यार ये चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाए। He needs a lot of games, फ्रेंडलीज जैसे आप लोगों ने भी कहा था, तो आई थिंक एटलीस्ट इसको 2-3 साल देने चाहिए। बाकी फैंस तो एग्री नहीं करते हमारे साथ, लेकिन ये है नहीं, कि आई वुड से कि दिस माइट बी अ बेस्ट ऑप्शन कि हम इसको लंबा दे। लेकिन डिपेंड करता है, स्टीफन खुद भी रहना चाहेगा। अभी देखें लीग, अब नई फेडरेशन आई है, वो लीग का क्या बनता है, कैंप्स का क्या बनता है, फंडिंग्स का, फ्रेंडलीज का, ये बहुत सारी, अभी तक तो हम नहीं। ये स्टीफन स्टीफन भी यही बोलता रहा ना कि यार लीग हो, कैंप्स हो, ये चीजें हो, तो अभी तो फेडरेशन आ गई है, तो अब देखते हैं, बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होंगी, लीग का क्या बनता है, कैंप्स का क्या बनता है, प्लेयर सैलरीज का एक इशू हम सुनते आ रहे हैं कि वो चल रहा है, फीफा फंडिंग्स है, फ्रेंडलीज आते हैं दरमियान में। अब ये भी डिपेंड करेगा, स्टीफन खुद भी बियॉन्ड हिज कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहेगा सर्टनली कुछ टाइम के लिए, तो वी डू सी हिम कंटिन्यू। अब लीग नहीं होती वो रहना चाहेगा, आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में उस टाइम भी अगर लीग, नई फेडरेशन के बाद भी लीग नहीं होती, तो वो रहना चाहेगा।
लेकिन वो ये बहुत सारी चीजें हैं इफ्स एंड बट्स पे कि ये हो जाए वो हो जाए. सो ओनली टाइम विल टेल अभी तो मैं इसीलिए ओपिनियन अपनी इसी तक रख रहा हूँ कि एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ एशियन क्वालिफायर्स, उसके बाद फिर लेट्स सी क्या बनता है. आई थिंक आई वुड एग्री एज वेल कि देखो आई थिंक स्टीफन को ये चीजें चाहिए, फ्रेंडलीज चाहिए, ये चाहिए, लीकर चाहिए, बिकॉज अगर ये ऑफर नहीं होगी तो स्टीफन वोंट स्टे एंड उसको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, इट डजंट वांट अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, so he wants a long term contract so that he has time और इस पर फोकस कर सके. So I believe कि यार उसको टाइम देना चाहिए. बाकी समीर, you want to add something to this topic? Not really. I think I agree with both Not of you. really. You agree as well? Actually, I just want to let the audience know as well, obviously, because this match is away. We sadly can't, go to Jinnah Stadium. Or obviously, away भी नहीं जा सकते Myanmar देखने match. So we are organizing a screening here in Islamabad and Lahore as well. If you guys are interested, so Islamabad में we have it at क्या नाम है, Hangout Cafe in हैंग E11. आउट है. We're doing it there, and Lahore we have it in I think second cup. इसकी डिटेल्स हमारे पेज पर आपको, हाँ, अब इसकी डिटेल्स आपको मेजोरिटी पेज पर मिल जाएगी हमारी, यू कैन सी दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर स्क्रीनिंग्स एज वेल. ऑब्वियसली दिस वाज अ बिट लास्ट मिनट बिकॉज जितना हमें पता था कि वी प्लेइंग होम, तो एकदम से लास्ट फ्यू वीक्स में ये चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से वी हैड टू शिफ्ट इट टू स्क्रीनिंग. तो इंशाल्लाह इफ यू कैन ज्वाइन इस्लामाबाद लाहौर में, तो इंशाल्लाह आप लोग ज्वाइन करना. Before I end this podcast, I wanted to ask you guys final predictions for this match. आप लोग को क्या लगता है कि कौन जीतेगा और क्या predictions होगी for this match? अच्छा, पाकिस्तान की प्रिडिक्शंस देना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक एक और अच्छी होप चलो, के साथ भी close इंशाल्लाह वन expectations. निल, और 1-0 probably बस. आई वुड बी हैप्पी Nil. अगर इफ यू Okay. कैन कार्व आउट अ विन. Win or loss? विन विन 1-0 विन, आई अच्छा होप win. सो, अच्छा 1-0. Okay. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. What do, what do you think, Sami? I think it's gonna be a close call. I think I'm going for 2-1 Pakistan. And the reason is because last year Syria also played against Yeah. Myanmar. I In Yeah, their yeah. first game, they played 1-1, I believe. But in the Okay. second game, Syria won 7-0. And I believe that was a slightly weaker team than Pakistan faced last game because they didn't have Al-Soma. We played Okay. against Al-Soma. And we also played against Harbin. Okay. And he scored a hat trick in that game against Okay. Myanmar last year. Fine. My prediction would be that we'll probably lose 2-1. It's not the best because I want to keep it very low expectations. I would believe that 2-1 would probably be the result because looking at the formation, Stephen is playing 5-3-2 unless he changed. Maybe हो सकता है कि 5-3-2, 4-3-4-3 बन जाए. In a counter attacks, you never know. But मेरी prediction ये है कि we might lose this game like 2-1. It would be very close. It would be the best, one of the best games that we play maybe. But I think we still gonna lose this match. So होप thank you गलत guys हो. for coming on the podcast. It's been a long time. We have done IFP Baithak wala. Inshallah हम और करते रहेंगे. And thank you for watching. Inshallah, see you soon. इंशाल्लाह, थैंक यू.